Okay, so your first question is here on the. Like, of course, we are doing NCRT questions. So, first question is all about the formula. It's just the formula-based questions. 1 second. Today, it's like some issue also that I'm facing. I'm not sure why this is happening. But just a second. Yes, okay. So the questions are: evaluate sine 18 degree upon cos 72 degree, tan 26 degree, cot 64 degree, and then the other two questions also. So let's solve the first question, Manu. So you can see in the first question, you have sine 18 degree and cos 72 degree, right, Manu? But do you know the Yes. values? Do you know the values of sine 18 degree and cos 72 degree? Of course, you don't know. We know only for 0, we know for 30, we know for 45, we know for 60, right? We don't know for these ones, right? So there is a way to solve these questions, and I'll tell you how can you solve. So the question is sine 18 degree upon cos 72 degree. Okay. Now my question is, Manya, how are you going to write down 18 degree? That means, can you tell me that 90 minus what will be 18? Now you'll understand why exactly we are going to write down in this way. Yes. So 90. So tell me, 90 minus what will be 18? So from 90, what will we subtract so that our answer will be 18? Don't you think we can write down this as 90 minus 72? Yes, Yes, I'm because thinking it. 90 minus, yeah, okay, you're getting the same answer. Yes. Okay, so of course you can see, Manya, that this 18 we can write down as 90 minus 72, right? Now the question is, why not 100 minus something? Why not 110 minus something? Because we do not have such formulas. We have only the formulas based on 90 minus that we did just now, right? So sine 90 minus 72 upon cos 72, we will be writing as it is. Okay, we will not do any change in the cos 72. Now, remember one thing, you could have done the same thing by keeping sine 18 as it is and writing cos 72 as cos 90 minus 18. तो किसी एक को ही चेंज करना है मान. I hope you are understanding what I'm saying. किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को या तो न्यूमरेटर को 90 माइनस वाले फॉर्म में लिखना है या फिर डिनोमिनेटर को लिखना है. अगर न्यूमरेटर को लिखा है 90 माइनस वाले फॉर्म में तो डिनोमिनेटर को कीप दैट एज इट इज. अगर डिनोमिनेटर को 90 माइनस वाले फॉर्म में लिखा है तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है. आई विल एडवाइज यू मान्या कि एक ही फॉलो करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर को चेंज करते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देते हैं. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज sin 90 minus theta formula. एंड रिमेंबर कि आप जो भी फॉर्मूला करोगे आपको वो लिखना है साइड में. ओके, एग्जामिनेशन हॉल में बता रही हूँ मैं कि आपको वो लिखना है विदाउट cos theta. So you can write on, since we know that sin 90 minus theta is cos theta, so sin 90 minus, instead of theta we have 72. So what will be sin 90 minus 72? Will that not become cos 72? Yes. Right? Cos 72 degree upon cos 72 already here. Now tell me, Manya, if we have same thing divided by same thing, what is the answer? 0. Same thing divided by the same thing. 2 by 2 is 0 or is it 1? 1, 1. 1. So the answer is 1. We are done. That's it. Understood? Now, अभी मैं दूसरा क्या बोल रही थी, I'll just explain you here. और आप ऐसा भी कर सकते थे कि sin 18 को आप ऐसे ही रहने दो, cos 72 को चेंज करेंगे. So what will you do? Cos 72 को हम लिख देंगे 90 minus 18. अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ऊपर वाला एंगल आ रहा है नीचे, बिकॉज 72 को क्या हम 90 minus 18 लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं. Yes. और इसके बाद यूज द फॉर्मूला sin 18 as it is. Now what is cos 90 minus theta? Sin theta. So this will become sin 18. दोनों केस में इफ यू नोटिस आंसर तो 1 ही आ रहा है. तो या तो आप ये वाला करो मान्या या तो ये करो. आई होप दिस इज क्लियर. Is there any query, Manya, No. related to this? Understood, right?
Yes. Okay, if it is clear, let's go to the next question. And I'm sure next question you can do it on your own. So let's have a look at it. Okay, I'm just hoping it will come. Okay, this is another kind of issue. I think I'll do one thing. I'll just write down the question from above only, and I'll try to bring the question for the third one. So your next question was tan 26 upon cot 64. Tan 26 upon cot 64, right? Now tell me, Manya, how will you solve this? Um, tan 26 Okay. Tan 26. यहाँ पे मैं start करती हूँ. So tan 26 you want to change, or do you want to change cot 64? tan किसी 26 एक. So tell me, tan 26 को कैसे लिखना है? 90 minus वाले form में. So tell me, 90 minus what is 26? 64 Very good. So यहाँ पे ना smartly you can see that नीचे 64 है, तो it will be 64 only upon cot 64. cos Now tell me, what is tan 90 minus theta? cot theta. Cot theta. So this will become cot theta is 64, right? You get it? 64 Yes. upon cot 64. What's the answer? 1. 1. That's the answer. We are done. Again, I'll just remind you कि आप जो भी formula use करो, you do not forget by any chance उसको side में लिखना, okay? तो वो आपको लिखना ही है. Since tan 90 minus theta will be cot theta. तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया. That's it. Okay, let's go to question number 3 now. So question number 3, Manya, can you try? How will you solve? Cos 48 degrees minus sin 42 degrees. So what exactly are you going to do? I'll just tell you, ये बस division form में नहीं है, subtraction form में है, but question similar है. एक को वैसे ही रहने देना है और किसी भी एक को change करना है. So tell me, what will you do? Cos 48 will Okay, remain same. same minus Minus 40, sin 42. sin 42 Sin को you want to change. So how will you write down? 48 minus 42. 48 formula 48 वाला है ही नहीं, 90 minus, right? Yes. Yeah, 90 minus 90 minus 42. 42 और 90 minus 48, क्योंकि हमें 48. 42 चाहिए, right? So अगर हमने 90 से 48 subtract किया, then only we'll get 42. So it will be 90 minus 48. Okay, next. Cos 48 will be as it is minus sin 90 minus theta. What is the formula of sin 90 minus theta? Cos theta. Cos theta. So we'll be writing also that sin 90 minus theta is cos theta. So this will become cos theta is, what is the value of theta? 48. Very good. So what is the answer of cos 48 minus cos 48? 1. See, okay, what is the minus of 2 minus 2? 0. So what is cos 48 minus cos 48? 0. 0, right? So you got confused. 2 by 2 is 1, right? Of course, because they will get cancelled. 2 times 1 is 2, 2 times 1 is 2, so it's 1. But same number, when they get subtracted, it's 0. Okay, let's go to the next question, question number 4. I'll not do any help, Manya, because this is very simple now. You can do it and you can tell me the answer. Cosec 31 minus sec 59. Tell me, what do you want to do? Cosec 31. Cosec 31, you want me to write down as it is. Okay. So it will be cosec 31. Minus Cosec 31 degrees minus sec sec 90 90. minus 31. Very good. Because see, हमने ये sec को as it is रखा. 59 को we have written as 90 minus 31. Next.
Cosec 31 as it is? minus cos Minus. What is the formula of sec 90 minus theta? cos theta. Sec 90 minus theta is Cosec cos theta theta. or cosec theta? That's correct. So it will become cosec 31, right? Okay, I'm sure my pen will work. Yeah. So cosec 31. Now what is cosec 31 minus cosec 31? 0. 0. And that's it. We are done. Right? Yes. Done, Anya? Clear? Okay, now let's go to the second question. See, we have done our first question of exercise 8.3. Now let's go to the second question of exercise 8.3. So I just copy both the questions from here and then we'll solve the next question. So in this one, maybe of course you can see that, oh, here this is a little different. So how can we do? We can do it. We just have to think a little bit and then we can easily do this question also. So, one moment. Okay, I'll just reshare my OneNote now. I think you can see my OneNote, right? Yes. Yes, okay. So your question is here. So, what does the question say? Show that. What is the meaning of show that? Is it a proof question or a solution you have to do? Proof. It's a proof because it is saying show that, right? So can you read the question first? Tan 48 degree, tan 23 degree, So what do you tan think is the sign between all these things? What do you think is the sign between all these things? multiplication. Multiplication. Very good. So show that tan 48 degrees. Yes. Tan 42 degree, tan 67 degree equal to 7. Very good. So any idea what should we do? Hmm. Think about it. Wrong is also okay, but please think about it. First, we will put multiply between tan. Okay, so that means you are saying that we will start with LHS, right? Yes. Okay, so on LHS, what is written? Tan 48 degree times tan 23 degrees, right? Times tan 42 degrees times tan 67 degree. I'll just tell you one thing, Manya. यहाँ पे भी you have to make a pair. दो pair को साथ में रखना. So how will you understand कि 48 23 को साथ में रखूं या 23 42 को साथ में रखूं या 42 67 को साथ में रखूं? I'll tell you कैसे साथ में रखना होता है. जस्ट चेक कि कौन से दो एंगल का सम 90 आ रहा है उसको साथ में रखना. टेल मी दो पैर आप बताओ चेक करके कि जिसका सम 90 आ रहा है उस दोनों को साथ में रखेंगे. I hope you understood what I said. Tan 48 and tan 42. Very good. उसको साथ में रखते हैं. So tan 48 degree times tan 42 degree. Of course times है multiply हो रहा है. If you want you can put this also. And then automatically 23 degrees और 67 degrees साथ में हो जाएंगे, right? Now tell me, Manya, what will you do? This is now very simple. किसी एक को वैसे ही रहने देना है और दूसरे को चेंज करना होता है. तो यू कैन गो फॉर इट. Okay. Tan 48 tan will be 40. remain same. Okay, you want to keep this as it is and then Cos. tan 42 को you want to change. तो पहले tan ही रहने देते हैं. फिर 90 minus what? 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 minus ध्यान से लिखिए. 9 48. यस, आप समझ रहे हो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली हम आगे जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें व्हाट डू यू वांट टू डू? Tan 48 will be remain same. For tan 23, you want to keep tan 23 as it is. Yes. Okay, then tan 67 को change करते, right? So into tan
67 को we can write on 90 minus 23. Yes. समझ आया माना? Do you have any doubt in this? No. नहीं, राइट? ओके, सो हमने पहले क्या किया, हमने वो एक साथ कर दिया जो 90 वाला सम आ रहा है, राइट? फिर 23 67 को एक साथ कर दिया एंड देन वी जस्ट डिड द सेम थिंग जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, किसी एक को चेंज किया और किसी एक को वैसे ही रखा. सो दिस विल बिकम tan 48 degrees into what is tan 90 minus theta? 48 Cot 48 degree. Very or good. 48 degree. Into tan 23 degree as it is, and what is tan 90 minus theta? Cot theta. So cot Cot. 20 degrees. Now tell me, Manya, what is the relation between tan and cot? ये हमने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में किया था. tan theta is equal to 1 by cot theta. हमने ये किया था, yes or no? Yes. यहां से मान्या यू आर गोइंग टू सी वन फॉर्मूला. अगर इस cot थीटा को हमें शिफ्ट करना हुआ तो विल इट नॉट बिकम tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1? ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे मैंने इससे ये फॉर्मूला निकाला? यू गॉट इट? Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया cot थीटा को उधर. सो नाउ कैन यू सी कि tan थीटा इनटू cot थीटा का फॉर्मूला हो रहा है 1. सो यहाँ पे तो यू कैन सी द सेम थिंग, tan थीटा इनटू cot थीटा. व्हाट्स द आंसर? Where theta is 48, right? So abhi you can use the formula. The formula is 1. मान्या, लेट मी टेल यू, ये जो थीटा है ये एंगल है और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट? बट ये ध्यान रखना है कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला 1. ऐसा नहीं होगा कि tan 36 एंड यहाँ पे हो रहा है cot 48, देन ये 1 नहीं होगा. ऑफ कोर्स इट शुड बी tan थीटा थीटा, सो दोनों एंगल सेम होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी हमारे आंसर में, हमारे सोल्यूशन में, और हमारे या तो I can say because it's a proof question. In this proof, you can see that we have at the place of theta 48 degree. So what is tan theta into cot theta? 1, where theta is 48. Similarly, into what is tan theta into cot theta again, where theta is 23 degree. So what's the answer? Is it on again 1? Yes. कैसे 1 आया? जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला. साइड में यू कैन राइट डाउन. ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये फॉर्मूला आया कैसे. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस tan थीटा इंटू cot थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है. और प्रोडक्ट 1 कैसे होता है? आई एक्सप्लेन हियर कि दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं. तो अगर हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला आ रहा है कि tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है. सो व्हाट इज 1 इंटू 1? मान्या 1. 1 times 1 is 1. और ये क्या है हमारा RHS? यही तो प्रूफ करना था हमें. वी आर डन, हेंस प्रूव्ड. प्रूफ क्वेश्चन में when we get the LHS is equal to RHS, then writing this part proved is the most satisfying thing that we do. So Manya, समझ आया? और do you have any doubt? क्या डाउट है? Tell me. क्या डाउट है? Tell me. If you have any doubt, I'll clear it. No. क्लियर है? ओके. अभी हम जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो यही क्वेश्चन वापस से क्लियर होगा बिकॉज दिस द सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू द फर्स्ट. सो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू टेल मी अगेन, ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी सॉल्व इट. So one second, I'll show you the question again. Okay, so the question is coming. Okay, I hope it will come. Where the question went? Okay, just a moment. Okay, it came. So you can see the second question. Can you read the question first? That is also show that only. That means a proof question. So just read it first. Cos 38 degree cos 52 degree minus sin 38 sin 52 degree. This question is like very simple now because मैंने already आपको prove करके रखा हुआ है. So first of all, I want to tell you कि cos 38 और cos 52 के बीच कौन सा साइन है माना? Multiplication. Multiplication. और उसके इन दोनों के बीच में of course माइनस साइन वो क्लियर दिख रहा है. So let's start with the proof, right? Of course, because it's a proof question, so you'll not write on SOL, which means solution, but you'll write on PROOF, which is the proof. Now, what is the first thing that I should write? LHS
Manya, remember one thing, proof question may always start from LHS, okay? Like LHS or RHS. Here you will be writing LHS. LHS में क्या है? Left hand side. Just write down the question as it is. I'll advise you one कि एग्जाम में कभी भी सोल्यूशन से लाइक पहला स्टेप जो है वो सोल्यूशन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. पहले जो क्वेश्चन है उसको एक बार वापस लिख दो आप. उसके बाद सेकंड स्टेप में यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो ज्यादा एलाबोरेटिव होगा वो. माइनस आई एम जस्ट टेलिंग यू सम tips and tricks. That's it. Okay, sine 38 degrees, sine 52 degrees. Now tell me, what should I write in the second step? Cos 38 will be remain same. Okay, you want to keep cos 38 as it is. I'll keep that as it is. Then into sine cos अभी चेंज नहीं करेंगे मान्या. cos को पहले cos ही रहने देंगे और 52 को पहले चेंज करेंगे in the terms of 90 minus 38. Perfect. Minus Sine 38 will be remain same. okay. Then into Mm-hmm. sine 90 Okay, sine 90 minus 38. okay, sine 90 minus 38. What is the answer? 52. Cos 38 as it is Cos 38 into into what is cos 90 minus theta? cos 52. cos 90 minus theta formula. यहाँ पे Sine आप माइनस करके तो फिर हम वापस से उसी स्टेप पे चले गए. यहाँ पे you have to use the formula. Cos 90 minus theta is sin theta. sine. Sin 38. Right, Manya? Understood? Yes. Okay, minus. This sin 38, keep it as it is. And then what is sin 90 minus theta? Sine Cos theta. Cos theta. Yeah, cos theta, which is cos 38. अभी you can notice कि हमारे पास आंसर ऑलरेडी मिल गया, but still I'll just write on this properly. So ये cos 38 into sin 38. Can I not write on cos 38 sin 38? Right? Minus. यहाँ पे sin 38 and cos 38 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. तो will that be a problem अगर मैं cos 38 को पहले लिख के sin 38 को बाद में लिखूं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आ रहा है. तो अगर हमने ऑर्डर चेंज भी कर दिया, 3 को पहले लिखा तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो लाइक दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ कैन यू सी कि आपके पास मान्या सेम टर्म यहाँ भी है और सेम टर्म यहाँ भी है और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो व्हाट इज सेम टर्म माइनस सेम टर्म? They got cancelled with each other. That means 0. And that is nothing but your RHS, if you notice. Hence proved. We are done. मान्या, आपको ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है. आप इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हो. ये सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, 0. बट आई रोट दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ आए कि ये माइनस हुआ क्यों, 0 हुआ क्यों. समझ आया मान्या? क्लियर? Yes. नो डाउट, राइट? Okay, so we are done with the first and second questions already of the evaluate and the proof. Now let's go to the third, fourth, and fifth question. And I think this is your exercise 8.3 last exercise only. No, we have one more. Okay, first we'll cover exercise 8.3, of course. Oh, okay. Where the questions went? Oh. You can see my screen, right? Yes. Okay, I think the questions are down. I'm just. Oh, it is 8.4. We were in 8.3 and we have 8.4 also to cover. Let's go to 8.3. Yes, it's here. So I'll just copy all the 3 questions together and then let's solve this.
I just hope it will come on on OneNote as well. Okay, so I think you can see my OneNote now. And let's try to paste all the three questions together and hope, yes, okay. Thankfully it came. So can you read the first question, Manya? If tan 2a equals to cot a minus 18 Mhm. degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. ओके आई जस्ट एडवाइस यू वन थिंग माना कि यहाँ पे ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप उन सब इन्फॉर्मेशन के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, नो, जस्ट जो भी गिवन है उसको लेना है और जो भी फाइंड करना है वो करना है, राइट? सो इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज गिवन टू यू? क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है? Tan 28 equal cot. You will write down that thing, that we have given tan 2a is equal to cot a minus 18, right? Okay. Find क्या करना है मान्या? Value of a, right? Now tell me मान्या, tan 2a को क्या हम cot के टर्म में लिख सकते हैं? इस tan Yes. 2a को can I not write down this as cot 90 minus 2a? Do you understand this? यहाँ पे मैंने क्या किया कि tan थीटा का ये जो फॉर्मूला है cot 90 minus थीटा, राइट? सी cot 90 minus थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। यहाँ पे हमारे पास tan थीटा गिवन है और हमने उस tan थीटा से हम एक स्टेप पीछे गए, वो फॉर्मूला लिखा हमने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. क्वेश्चन क्यों लिखा? बिकॉज इफ यू नोटिस आरएचएस में भी हमारे पास कॉट ही है, राइट? तो इसीलिए हमने इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो कॉट 90 minus 2a एंड दिस इज कॉट a minus 18 as it is. Now do you remember मान्य एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब वह थीटा एंड अल्फा क्या है? दोनों एंगल्स है। तो ये इंप्लाई ये करता है, यू नो, इन योर माइंड यू कैन से ये साइन साइन कैंसिल हो रहा है, एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है वो। ओके, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग ये साइन साइन कैंसिल होके थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है, राइट? सेम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए भी है। इफ cos थीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। If tan theta will be equal to tan alpha, theta will be equal to alpha. If cot theta will be equal to cot alpha, then theta will be equal to alpha. So do you notice मान्या कि ये और ये दोनों आपस में cancel हो जाएंगे? I'm just telling using the word cancel to make you understand. आप इसको कभी भी cancel मत करना क्योंकि ये cancel नहीं होता है. It's just a property कि ये cot cot हट जाएगा और जो भी यहाँ पे है वो एक दूसरे के equal हो जाता है। अंडरस्टूड? ये हमने किया था फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी। एंड फॉर दैट व्हाट विल यू राइट डाउन इन द फॉर्मूला? इन द फॉर्मूला यू विल राइट डाउन इफ कॉट के टर्म में, तो राइट डाउन इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा, दिस विल इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन राइट डाउन दैट दिस इम्प्लाइज 90 minus 2a is equal to a minus 18. Now you can notice Manya that this is nothing but a linear equation. क्या फाइंड करना है हमें? कैपिटल ए फाइंड करना है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू? शुड वी नॉट कीप 90 एज इट इज और माइनस 18 को लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट किया, सो विल दिस नॉट बिकम प्लस 18? Yes. यस, ओके, हमें ए निकालना है, राइट? ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 2a को हम ए के साइड शिफ्ट करेंगे, मीनिंग राइट साइड शिफ्ट करेंगे। सो व्हाट विल माइनस 2a बिकम? +2 है. Very good. What is the next step? Now you can solve and you can find out a. Yes. 88. 88 or 108? You're adding them, right? So it's 108 degrees is equal to, what is a plus 2a? 2a square. No, no, no. What is x plus 2x? Is it not 3x? Because यहाँ पे Yes. 1 है, right? 1 plus 2 add हुआ. Same way, what is a plus 2a?
So is it not like 3. 1 and 2 are getting added? 3 and then A as it is, so it is 3A, right? So now tell me, if 108 degrees is equal to 3A, Manya, what will be the value of A? A का value क्या होगा? You know that 3 को कैसे हटाएं हम A से? 3A से multiply हो रहा है. So दूसरी साइड जाके वो divide हो जाएगा. डिवाइड होगा. Correct? So it will become 108. Okay, I'm not able to write. I'm not sure why. You can tell me the answer. What is the value of A? 108 by 3. Divide and tell me the answer. I'm not sure why I'm not able to write. Oh, yes, I think I'll be able to write. 108 by 3 is equal to A. I hope इस step में कोई doubt नहीं है, मान्या. Okay, so now tell me, what is the value of A? जो भी आंसर आएगा वो डिग्रीज में आएगा. इसको डालो, कॉलम पे डालो, तो 96. 96. Okay. How you are getting 96? You're doing 108 divided by 3. Okay, let's check. You like long division method, Manya? Yes. Okay, so Yes. 108 here and 3 here. Tell me, what will you do? 3. 3 Correct. 3 is a 9. 3 is 9. What is 10 minus 9? 1. 1. Write on 8 as it is. Now tell me, 3 times what is 18? 6. Correct. So what is the answer? 36. Correct. So 3 times 6 is 18 and 18 minus 18 is 0. So the answer is 36. So what is the value of A? The value of A is 36 degrees. Got it. Done. Okay, so I'm not asking you to take the picture of these things because you will have the link. Manya, you can just go through these questions once again, right? By just watching the video. Okay, now let's go to the next question. So question number 4. Now tell me question number 4. What does the question say? Is it a proof question? Is it a find the value question? What is it? Proof. Proof. Okay, can you read the question? If tan A equal cot B, prove that A plus B equal 90. Correct. So remember one thing, Manya, कि proof वाले question में ना थोड़ा you have to write things, right? So I'll just suggest you कि बाकी के भी questions कोई भी, and if that question would be a proof question, Manya, तो आप उस questions के पहले given information को लिखना. You can write down given tan A is equal to cot B because ये given है. इसके बाद you can write that what do you have to prove? So prove क्या करना है? To prove A plus B is 90 degree. ये हमें prove करना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया माना? अभी तक मैंने कुछ भी start किया solve करना नहीं. It's just मैंने question को ही लिख दिया है. क्यों? So that कुछ थोड़ा बड़ा हो, solution. That is why, or the proof. So ये सब smartness मान्य आप एग्जाम में दिखाना, ओके? थोड़ा क्वेश्चंस को लिखना, थोड़ा I would say empty spaces मत रखना. You can write down few things, okay, like this only, questions को देख के, and then you can start with the proof. और जब proof start करें तो फिर से हम वही given चीज लिख सकते हैं. Proof में क्या लिखेंगे? Since tan A is equal to cot B, ये क्या है? Given है. प्रूव हमें ऑफ कोर्स करना है a plus b is equal to 90. Now tell me मान्या, tan a को फॉर्मूला में कैसे लिख सकते हैं? tan a is equal to what of 90. 90 minus a? Cot of 90 minus a. Yes, ये cot of फॉर्मूला 90. था. तो tan a को हम लिख सकते हैं cot of 90 minus a. cot b को डोंट चेंज मानना है. क्यों नहीं चेंज करेंगे? बिकॉज अब हमारे पास दोनों सेम टर्म्स आ गए. ये भी cot आ गया, ये भी cot आ गया. कैन यू नॉट टेल मी इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? क्या कैंसिल हो जाएगा? लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ Cot. सेइंग इट, बट कि वो कैंसिल करना नहीं है भाई. एनी चांस माना कभी भी इसको ऐसे कैंसिल मत करना, क्योंकि फिर एग्जामिनर देख के ही लगेगा, उसको लगेगा कि ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये तो कैंसिल ही नहीं होता, राइट? तो आप वो कैंसिल मत करना. जस्ट इन द नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन दैट दिस इंप्लाइज
90 minus A is equal to B. Got it? And then after this, what will you do? 90 Yeah, 90 you will keep as it is. और माइनस ए को क्या हम दूसरे Plus A. साइड शिफ्ट करके ए नहीं कर सकते? यस, और ये बी जो है वो प्लस बी एज इट इज. सो डू यू नोटिस कि हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था. ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूव्ड. डन. वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2. सो कैन यू से कितना सिंपल था ये क्वेश्चन. जस्ट हम वो जो भी 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलाज थे, हमने सिर्फ वो फॉर्मूलाज ही यूज किए हैं. गॉट इट मान्या? क्लियर? Let's Yes. go to the last question. Like out of those 3 questions, the last question. I hope जितने भी questions हमने अभी तक किए मान्या, you do not have any doubt, right? Clear हुआ? I'll suggest you मान्या, whenever I'll share the recording of this class, you can go through it, okay? आप एक बार देख लेना. Okay. So your question is here. If sec 4a is equal to cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, you don't have to worry about it. Find the value of a. So this is now a find the value question. So let's solve question number 5. What is given in the question? Sec 4A equal to cosec A Sec minus 20 4a degree. is equal to cosec a minus 20 degree. और हमें find क्या करना है यहाँ पे? A. A find करना है. So you can write down that we have to find A. So let's start. Now tell me, sec theta को हम कैसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं? Sec theta को कौन से फॉर्मूला में लिख सकते हैं in terms of 90 minus? Cos theta. Cos Cosec or theta. cosec? Yes. So we can write down, since sec theta can be written as cosec 90 minus theta, तो क्या हम sec 4a को cosec क्या लिख सकते हैं हमारा? You tell me. ये फॉर्मूला देखकर cosec Cosec यहाँ पे 4A का रूल 4a है. cosec 90 minus 90 minus 4a, 4A. राइट. अभी आप दूसरे साइड को चेंज नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि ये भी cosec हो गया और ये ऑलरेडी cosec है. ऑफ कोर्स चेंज नहीं करेंगे. और ये अगर चेंज नहीं करेंगे तो ही वो सेम होगा और तो ही हम कैंसिल कर सकते हैं. एंड देन वी कैन राइट डाउन, like we can find the value of a. So what will this imply? Can you tell me the next step? 90 minus 4A equal A minus 20. Very good. So 90 minus 4a equals a minus 20, right? You have to find the value of a. Manya, this is not like a linear equation now. So you can tell me the answer. 90 will be remain same. And Okay. it will be remains plus the- 20. Plus 20. Very good. And then? Equal A plus 4A. Okay, very good. A will be as it is and minus 4a will become plus 4a. Next step. 120. 90 plus 20. 90 plus 20 is 120. Check. 100 plus 20 is 120 for sure. 110. Very good. It's 110 is equal to, what is a plus 4a? 5A. Very good. Now what is the value of a? Just a sec. 22. Very good. That is correct. So it will get divided. So the value of a is 22 degrees and we are done because that is what we wanted to find. A, which is 22 degrees. Done. Manya, got it? Yes. Yes, okay. Now we can go to the next question. See, we have already covered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. Now let's go to the next question. And I think we have 2 more questions. We can finish both the questions today only. And these 2 questions are also very simple. It's not at all difficult. You can quickly do it. Just a moment. Let me copy the question. Okay, and now I'll share.
Okay, so I think you can now see my OneNote, Yes. and the question is here. So we will solve this question number 6 first, right? Can you read the question? If A, B, and C are in interior angle of a triangle ABC, then show Show that that this sine A plus C upon sine B plus C. 2 equal B plus C upon 2 equal to cos A upon 2. Correct. Okay. So Manya, let's solve this, right? So you can notice that यहाँ पे इस क्वेश्चन में you can see एक शेप के बारे में बात हुआ है. कौन सा शेप? कौन सा शेप के बारे में बात हो रहा है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल. इस क्वेश्चन में कौन सा शेप गिवन है? Triangle. ट्राइंगल. सो ट्राइंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई होप यू नो कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो एक एंगल के इक्वल होता है. You know the value? So tell me, what do you know? Hmm. We know in a triangle, what do you know? Tell me. We know 90 in a triangle. No, I'll tell you. We know in a triangle, Manya, किसी भी triangle में, not just in a small triangle or in a triangle like this, in a very big triangle, in any triangle, Manya, एक बहुत ही important property है triangle की, which is तीन एंगल्स का जो सम होता है इन अ ट्राइंगल वो हमेशा 180 डिग्रीज के 180. इक्वल होता है, राइट? सो यू कैन राइट डाउन वी नो इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द थ्री एंगल्स. Why am I using ABC? Because यहाँ पे you can see कि ABC triangle use हुआ है, right? So of course angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree, right? Now notice one thing मान्या कि यहाँ पे LHS में you have B plus C, right? मतलब और भी टर्म्स है बट B plus C साथ में है और A जो है वो दूसरे साइड शिफ्ट किया हुआ है, राइट? करेक्ट. Yes. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एंगल B plus C को इसी साइड रहने देंगे and will shift A to the other side. So this will become 180 degree minus angle A. Got it? समझ में? Yes. ओके. क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रूफ में दिख रहा है कि B plus C साथ में और A जो है वो दूसरे साइड है, तो हमने दूसरे साइड. नाउ मान्या, आई होप यू नो वन थिंग कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन होता है तो हम दोनों इक्वेशन में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं. वो सेम होना चाहिए, राइट? सो अभी डू यू नो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, राइट? अभी इफ यू हैव अ क्वेश्चन, क्यों 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? कैन यू सी 2 है यहाँ पे? All I Yes. want to do is कि जो क्वेश्चन है मैं बस वही लाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, सो वी आर डूइंग दैट ओनली. नाउ टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? विल इट नॉट बिकम एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2? क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया. सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, राइट? अभी डू यू नोटिस कि एंगल बी और एंगल सी के साथ 2 है बट ए के साथ 2 सेपरेट है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, अभी हम जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे. सो दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 को वैसे. जस्ट अ मोमेंट. ओके, वन सेकेंड. So this will become angle B plus angle C by 2 as it is. Oh, am I able to erase? Yeah, okay. So angle B plus angle C by 2 as it is. और यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं 2 को. इट्स लाइक एलसीएम जो लिया हुआ है ना उसके हम एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं. सो ये 2 को सेपरेट करेंगे तो 180 by 2 माइनस एंगल ए by 2. डू यू अंडरस्टैंड? यस. Yes. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान्या. मे बी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है. तो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की, वो लिखा, फिर हमने बी प्लस सी को वैसे ही रखा, ए को शिफ्ट किया, उसके बाद हमने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया और फिर उस 2 को दूसरे साइड सेपरेट कर दिया 180 by 2 एंड देन एंगल ए by 2. और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी by 2 एज इट इज. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज 180 डिग्री माइनस 2? Sorry, 180 degree by 2. Did I say minus 2?
180 divided by 2, what will be the answer? It's a simple division. So, yes. Just a moment. 90. 90, that's correct. Will become 90. So this will become 90 minus, of course, 180 divided by 2 will become 90. So this is 90 now. 90 degree minus angle A by 2 as it is. Abhi, let's look at the proof again. Manya, kya proof karna hame? It says prove that or show that sine of this. But हमारे पास क्या है? Sine नहीं है. So you will write down by taking sine on both sides. That's it. और ये सब हम just question को देख के कर रहे हैं. So taking sine on both sides, of course, what will this become? It will become sine of angle B plus angle C by 2, and this will become equals sine of 90 degree minus angle A by 2. If you can notice, Manya, दोनों angles जैसे था मैंने वैसे ही रखा है by just adding sine. I have just taken sine on both the sides. That's it. और कुछ भी नहीं किया, right? So of course हमारे LHS में तो यही term है, तो we'll just write down sine of angle B plus angle C as it is upon 2. Now here, can you not use the formula of sine 90 minus theta? Tell me, what is sine 90 minus theta? Cosec theta. Cosec or cos? Cot. Cos. Cos. Sine or cos का ध्यान रखना है. Cos theta. So this will become cos angle A by 2. And this is what we wanted to prove, Manya. We are done. Hence proved. Did you understand this question? Yes. See, हमने ये प्रूव किया जो प्रूव करना था. Show that हमने इससे start किया and we have reached to this thing, which is done. Now question number 7 is very simple, so we'll solve question number 7 also right now. In question number 7, if I just try to show you the question here once again, I'm just hoping the question will come. Yes, can you read the question, Manya? ये बहुत ही simple question है, हम easily कर सकते हैं. Express sine 67 degrees plus cos 75 degrees in terms of the trigonometric ratios of the angle between 0 and 45. I'll tell you इस question में करना क्या. इस question में हमारे पास दिया है sine 67 degrees plus cos 75 degrees, right? If you notice, मान्या, ये दोनों angles जो है वो है 67 और 75. But this is saying express this in an angle between 0 and 45. So आपका ये जो 67 है, इसको आपको convert करना है ऐसे, so that ये angle जो है वो 0 से 45 के बीच आ जाए, और 75 को भी आपको convert ऐसे करना है कि ये 0 से 45 आ जाए, and then that's it, we are done. And that is so simple, right? अभी can you not write down sine 67 को 90 minus क्या लिखेंगे? यहाँ पे 75 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि of course you can see कि 90 में से 75 अगर minus किया, so it is not 67, it is 15, right? So think about it. 90 minus what will be 67? So अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप 67 को subtract कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. What is the answer? 10 minus 7, 3, 8 minus 6, 2. So can you not write down 23? Yes, you can. Plus, अभी यहाँ पे भी you have to change माना है. क्यों? क्योंकि हमें 75 को change करना है 0 से 45 के बीच, क्योंकि ये बोल रहा है express करना है उस angles के बीच. तो यहाँ पे भी सेम करेंगे. यहाँ पे तो इनफैक्ट इट इज इजी, 90 minus 15. डू यू अंडरस्टैंड मान्या कि मैंने क्या किया है? मैंने 67 डिग्रीज को और 67 नंबर को 90 माइनस फॉर्म में लिखा, आई गॉट 23, और 75 को भी आई जस्ट रिटन दिस एज 90 minus 15. गॉट इट? Yes. नाउ टेल मी व्हाट इज sin 90 minus theta formula? Cos theta, right? So it Cos will become theta. cos 23, right? And plus, what is cos 90 minus theta? Sin theta. So it will become sin 15. Now that's it. We are done with the solution because it wanted between 0 and 45. Now tell me, Manya, 23 degrees in between 0 and 45? Yes. 15 degrees in between 0 and 45? Yes. And we are done. Yes. We expressed our 67 and 75 degrees
in between 0 and 45 degrees, which is 23 and 15, and we are done. Also, I'll just remind you, don't forget to write down the formula which you have used. So you have used here two formulas, sine 90 minus theta cos theta, and there is another formula that you have used, which is cos 90 minus theta sine theta. Clear, Manya? Yes, so we have completed exercise 8.3. I hope you understood every single